ओके। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके सो अक्टूबर 2023, यस हमने ये वाला पेपर हादी स्टार्ट किया था। ठीक है, यस दिस इज द सेम पेपर दैट वी स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास, अक्टूबर 2023, वेरिएंट नंबर 32। पेपर 3 बेसिकली हम कर रहे हैं, और तुबा अभी तक हमने इसका एक क्वेश्चन जो है वो कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, टुडे वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पेपर, दिस इज पेपर 3। एंड तो जी, और केस अगर तुम्हें याद हो तो केस बड़ा फिट केस था इसका। कैल्जारो किला, सी क्यू, द नेम ऑफ द बिजनेस इज सी क्यू। इफ यू रिमेंबर द केस, Federico Lorca set up CQ in 2018 in country P. He had identified a gap in the market for comfortable, fashionable, sustainable footwear made from bamboo and recycled materials. He gave up a senior leadership role with a multinational shoe manufacturer to start CQ. Federico is very keen to use his previous leadership expertise to lead CQ to success. And to help finance CQ, Federico used his house as security for a loan. He also persuaded a venture capitalist to take a 49% shares of CQ. This finance was used to fund CQ innovative products development. Federico worked very hard to identify ethical suppliers of suitable materials and found a shoe manufacturer with high ethical standard in country S. After Federico had recruited an experienced management team, CQ was able to launch its innovative new shoe range in 2019. So भाई हम bamboo shoes बना रहे हैं। Federico was determined to inspire CQ employees and other stakeholders with an effective mission statement. He decided that it should be to bring comfort to feet everywhere while working towards carbon neutral production and distribution. ठीक है जी। अच्छा खासा जो है वो बॉय नौकरी कर रहा था, उसने नौकरी छोड़ी और इसने जो है वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सीक्यू। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, and bamboo is a material that is light, flexible, and hard wearing, with low environmental impact. Used Bamboo used in CQ shoes is sourced from the US. CQ shoes have high quality image and are ideal to wear in hot weather. And the unique construction of shoes require minimal cutting and less energy to produce than traditional shoes. CQ continues to invest in product development and makes changes to its product ranges each year. So they are developing their new products every year, and including improvements in material and construction. CQ is currently developing a range of running shoes to challenge leading brands in the market. ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हमारी कहानी पता चल गई हमें। वी आर यूजिंग सोशल मीडिया टू एडवर्टाइज, एंड वेबसाइट है हमारी अपनी। फिल्म स्टार ने हमें इंडोर्स कर दिया था। ऑनलाइन परचेजिंग बढ़ गई थी कोविड के दौरान। यूएस में हम सेल्स बढ़ाना चाह रहे थे। And until 2023, CQ shoes were manufactured by a business in country S. However, because of changing economic conditions and the challenges of outsourcing production to a foreign country, Frederico decided to move production to country P. He identified an unprofitable shoe manufacturer as the target takeover. The takeover was completed in 2023. During the first 6 months of production after the takeover, the following operational problems were identified. Okay, so the production was brought in-house. Initially, the production was done in country S, which was outsourced basically, and now the production was just brought in-house by taking over a shoe manufacturer. And the output was 120,000 units, 20,000 units below target and below capacity of 160,000 units. Supply chain failures resulted in high levels of inventory being held, and quality control identified 5% of output had defects. Frederico met with trade unions to discuss these problems. Unions agreed to consider changes to working practices. However, they agreed to the implementation of lean production if supported by investment in workforce training. और फिर उनके ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है वो हम नया प्रोजेक्ट जो है वो उस पर $1 million इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। And there were two economic changes. Depreciation and taxation was about to increase, and then there are some financial data given. ठीक है जी, केस याद आ गया है सबको? ये केस हमने पहले रीड किया था पूरा, थोड़ा मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन ये केस हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। एंड इसका क्वेश्चन 1 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इज इट क्लियर अप टिल नाउ एवरीवन? आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड ऑन द चैट स्क्रीन।
सेट चल रहा है। ठीक है जी, जरा सोचना शुरू करो। जाहिर है क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, जाहिर है, लेकिन तुम्हें अपना जहन फुल चलाना है ताकि तुम लिखना सीख सको। कल को जब तुम पेपर 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू शुड नो ऑल द टेक्निक्स, यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर्स, you should know how to construct a high quality answer. It is not just about attending this class and then just copying and pasting. It is about learning the writing skills. Okay, it's an important part, a very very important part. And question 2 देखो क्या कहता है। Analyze how two qualities of leadership demonstrated by Federico have contributed to CQ's success. Okay, so analyze how two qualities of leadership demonstrated by Federico have contributed to CQ's success. So 8 मार्क है, 8 मार्क के लिए हमें कितना स्पेस गिवन है? 1 पेज ना। 8 मार्क्स के लिए हमें 1 पेज गिवन होगा, और इसमें हमें आई थिंक इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में तो पता है हमें क्लियरली हमें क्या डिफाइन करना चाहिए इस आंसर के। हमें बताना है कि फ्रेडरिको ने कौन सी 2 लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो यूज की है, हमें कौन सी नजर आ रही है। तो इंट्रोडक्शन में क्या दूं? वी विल डेफिनेटली डिफाइन लीडरशिप। वेरी नाइस अब्दुल्ला। और 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं, हमें कोई 2 क्वालिटीज बतानी होंगी। तो लीडरशिप की तो लीडर्स की तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। वो रिस्क टेकर भी होते हैं, वो they are good communicators as well, and they are good motivator. Yes, they work as a motivation and a figurehead for other people in the company, right? They are innovative. Yes, they are innovative and creative with their ideas. They think out of the box, they come up with new solution. They have the ability to bounce back. Yes, because because if something goes wrong, then a good leader will be able to just be firm and confident enough to help the company to overcome that whatever problem it is, right? They are very persuasive. Yes, they have good communication skills. They have a very high emotional confidence level, emotional maturity level. Kya baat hai. They are hardworking. Yes, they are very hardworking. They are risk takers. अब कोई भी हमें 2 क्वालिटीज लिखनी है, जाहिर है 2 पैराग्राफ्स हैं। आई गेस वी हैव टू टॉक अबाउट एनी 2 qualities of leadership that Frederico demonstrated. And ideally, I should be writing those qualities which I can connect back with the case, right? I have to connect my answer to the case also. So I'll have to find some instances, I'll have to find some examples from the case जहाँ पे मैं एक्चुअल फ्रेडरिको की एग्जाम्पल दे के बात करूं, ताकि मेरा आंसर भी थोड़ा सा हाई क्वालिटी हो ना। सो कौन सी ऐसी क्वालिटी नज़र आ रही है तुम्हें केस में? एग्जाम्पल्स भी चाहिए होंगी हमें। Federico persuaded venture capitalists to take 49% of CQ shares. Yes, उसने venture capitalist को convince कर दिया था, so he was really persuasive with that. Yes, okay, Anas. और क्या क्वालिटीज नजर आ रही हैं इसकी? रिस्क टेकर क्यों नजर आ रहा है? रिस्क, इफ आई से फ्रेडरिको इज अ रिस्क टेकर तो वाई? He took over the underperforming companies, also risk. Very nice. Examples के थ्रू बात करो ना। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट इन CQ। लोन लिया इसने, यस, सिक्योरिटी अगेंस्ट अपना घर रखवा दिया था सिक्योरिटी, यार बड़ी बात है। इनोवेशन इज क्लियरली अ प्रॉप, सस्टेनेबिलिटी के लिए सोच रहा है। द प्रोडक्ट इटसेल्फ, मार्केट गैप इसने ढूंढा, बिल्कुल गुड। ट्रेड यूनियन को भी कन्विंस कर लिया था ना फ्रेडरिको, मेट विद ट्रेड यूनियंस। यूनियन से भी वो नेगोशिएशन में काफी सक्सेसफुल रहा। Hmm, अपनी खुद की नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ के इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ये भी तो एक रिस्क है ना यार, जो बात है। सो आई थिंक हम एक रिस्क के बारे में बहुत नजर आ रहा है। सो आई थिंक 1 क्वालिटी वी कैन राइट अबाउट रिस्क टेकर, and second we can write about being innovative. I can write about any 2 qualities which I can explain well, and ideally I should practice to write my answer within the given space only. Okay,
और आइडियली इंट्रोडक्शन जो है वो आइडियली 3 लाइन्स तक हो, उससे ज़्यादा ना हो आइडियली। हो सकता है ज़्यादा, कोई रूल नहीं है, लेकिन आइडियली 3 लाइन तक हम लिखेंगे अपना इंट्रोडक्शन। एंड देन maybe somewhere in between I can just put a line, okay, like this. So when I start writing, I should know that when I should be ending my first paragraph and then how much space I should be giving to the second paragraph. Okay. लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी की डेफिनेशन बता दो, चलो तुम लोग बताओ। हाउ डू वी डिफाइन लीडरशिप? हाई क्वालिटी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? Ability to motivate, coordinate and take risk. Leadership is the ability to influence, motivate, and guide others towards achieving a common goal. Yes. क्या definitions आ रही हैं crazy. Leader inspires employees to work hard in order to achieve a shared goal. Leaders are taking the role that involves leading the organization to higher levels. Beautiful definitions. Okay, we can write one definition. Good leadership is an art of motivating, guiding, and leading a group of people towards achieving a desired goal. ठीक है? One of the qualities that Federico has demonstrated one of the qualities that Federico has demonstrated is being a risk taker. This means that as a leader, it is important to believe in yourself and take decisions which might sound risky to other people. As it can be seen, as it can be seen, that Federico left his stable job at a multinational Federico left his stable job at a multinational shoemaker to start his own venture, which would have an opportunity cost, as Federico would have compromised
on his salary. Also, also taking over a shoe manufacturer, a loss making shoe manufacturer in country S is also risky decision as if such decisions goes wrong, then it can severely impact the financial position of CQ. Federico have been has been confident with such decisions, which is a real quality for the company. Which is a real quality for the company. ज़ाहिर है इसकी वजह से फिर बहुत सक्सेस की तरफ कंट्रीब्यूशन हुआ होगा. So one of the qualities that Federico has demonstrated is being a risk taker. This means that as a leader, it is important to believe in yourself and take decisions which might sound risky to other people. As it can be seen that Federico left his stable job at a multinational shoe maker to start his own venture, which would have an opportunity cost as Federico would have compromised on his salary. Also taking over a loss-making shoe manufacturer in country S is also a risky decision, as if such decision goes wrong, then it can severely impact the financial position of CQ. Federico has been confident with such decisions, which is a real quality for the company. यार टेक ओवर आने से बड़े फायदे होंगे. अभी तो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन इन हाउस लेकर आना इज अ बिग बिग डिसीजन, राइट. नाइस. हो गया कॉपी. प्रूव्स. I guess writing answers is one of the most important things that we have to do. You have to do also. Right? Writing skills वो चीज़ है जिसको full focus बना लो, crazily focus बना लो, छोड़ना नहीं. मतलब इतने पास पेपर इतने आंसर लिखो कि क्या ही बताऊं. Only having problems in implementing key concepts. ठीक है, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा अब्दुल्ला. जैसे जैसे राइटिंग प्रैक्टिस चलती जाती है ना, जैसे जैसे आंसर्स लिखते जाते हैं, तो वो है ना हमारे बिल्कुल नेचुरल इंस्टिंक्ट में आ जाता है. सही है. मतलब यूँ समझो कि जैसे आंसर लिखते हैं ना, जैसे राइटिंग स्किल इतनी प्रैक्टिस करना होती है कि वो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाए. कल को जब एक्चुअल में जब एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो आंसर, तो वो नेचुरली खुद ही फ्लो बना हुआ उतना अच्छा. अब भले हमने 100% सही आंसर नहीं लिखने होते हैं. पेपर 3 पेपर 4 ये बड़े पेपर्स हैं, 100% मार्क्स नहीं आ जाते हैं. 100%, 60 आउट ऑफ 60 नहीं चाहिए हमें भाई. हमें पूरा ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छा करना होता है. कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि मुश्किल भी आ जाए, कोई क्वेश्चन हो सकता है कम्प्लीटली मुश्किल आ जाए, और वो कुछ हमें थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज भी नज़र आएगा. ठीक है. स्ट्रगलिंग फेज भी आता है आंसर राइटिंग में. मतलब एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो सब तो इजी नहीं होगा ना, कुछ तो मुश्किल होगा. है ना, कुछ तो चीज़ें मुश्किल लगेंगी एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. राइट. कुछ बच्चे होते हैं जो है ना मुश्किल क्वेश्चन दे के थोड़े घबरा जाते हैं और पता नहीं वो
कंफ्यूज से हो जाते हैं कि अरे मुश्किल क्वेश्चन आ गया, लिखा नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होना होता, मतलब ओवरऑल आपके जो 5 सवाल आ रहे हैं पेपर 3 में, आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चंस वी हैव टू मेक श्योर दैट वी अटेम्प्ट टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट ओवरऑल। हर सवाल में 100% मार्क्स नहीं हो सकते, कहीं कहीं गलती हो सकती है, कहीं कोई एरर हो सकता है, कोई ब्लंडर हो सकता है, कोई चीज़ हम भूल सकते हैं, जाहिर है ह्यूमन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट व्हेन यू राइट ना, you should be writing a very high quality answer, and you should be writing so much before exam that it becomes your natural instinct. That is what my main point is, that it should become your natural instinct. It should just be in the flow, like okay, you know how it works, right? Rather than thinking a lot in examination, by the way, right? मतलब इतना लिखो कि फिर वो पॉइंट सारे सोचना तो पड़ेगा, लेकिन वो नेचुरली आपका, जैसे गाड़ी चलाते हैं, तो जब बिल्कुल नई नई ड्राइविंग सीखते हैं ना, नई ड्राइविंग स्किल है ना, जैसे ड्राइविंग भी, तो अगर गाड़ी चलाना सीखते हैं तो यूँ समझो कि शुरू में पहली दफ़ा गाड़ी चलाते हैं तो ज़रा शुरू में मुश्किल होता है, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, जितनी दफ़ा वो हम प्रैक्टिस करते हैं वो स्किल फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल एक सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। अब गाड़ी में बैठते हैं भाई, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही, भैया आप बस सबकॉन्शियसली चला रहे हो, तो अक्सर ऐसा भी होता है। समझ आए? तो आप इतना वो स्किल प्रैक्टिस करते हो कि वो चीज़ आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाए बेसिकली। This is what the writing skill is. That's what I'm trying to tell you. Okay. And another quality, एग्जाम में अगर डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड ना हो तो नहीं, उसका मसला नहीं है ताहा। बस जब डेफिनेशन हम लिख रहे हों तो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो हमने ज़रूर यूज़ की हों। जैसे लीडरशिप अगर डिफाइन कर रहे हैं तो लीडरशिप के साथ मोटिवेटिंग, गाइडिंग, गोल्स, ये बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है ना। तो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज उसके अंदर एटलीस्ट हो जो उससे रिलेटेड है, पूरा वर्ड टू वर्ड वाले ना हो। ठीक है। अनदर क्वालिटी that Federico demonstrated is being innovative with his ideas. This means that a successful leader, this means that a successful leader must be creative with their thoughts and should be able to come up with out of the box solutions for the success of the business. Federico was clearly very creative as he was able to spot the gap in the market. He was able to spot the gap in the market, and he was able to come up as he was market, and he was able to come up with what? As he was able to spot the gap in the market, and he was able to come up with a new shoe design which is comfortable, fashionable, yes, and sustainable
which is comfortable, fashionable, and sustainable, made from bamboo material, bamboo and recycled material. Coming up with this innovative product would have significantly helped would have significantly helped CQ would have significantly helped CQ would have significantly helped CQ to stand out in the market, which would have significantly helped CQs to stand out in the market and to get a strong competitive edge in country P. ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इजी सा क्वेश्चन है। आई थिंक पेपर 3 का ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एंड आई गेस इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे जैसे हमारी ये क्लासेस आगे बढ़ रही हैं प्रैक्टिस की, तो वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जा रहा होगा पेपर अटेम्प्ट करने का ना। अब अगली दफ़ा ज़ाहिर है तुम अगर कोई खुद से पास पेपर अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस और बेहतर होना चाहिए। और अगर घर पे खुद से कोई पास पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो मार्किंग स्कीम्स को रीड करने की आदत रखो। मार्किंग स्कीम जब देखते हैं तो मार्किंग, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो इसमें क्लियरली हमें जब मार्किंग स्कीम देखते हैं ना, तो जैसे एनालाइज हाउ टू क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फ्रेडरिको हैव कंट्रीब्यूटेड टू सी क्यू सक्सेस। एंड मार्किंग स्कीम में फिर हमारे पास क्लियरली देखो नॉलेज पॉइंट्स भी गिवन है, दैट दे शुड हैव अ डिजायर टू सक्सीड, दे शुड बी रिस्क टेकर, कॉन्फिडेंट, इनोवेटिव, डिसाइसिव, being inspirational, they should be honest and have integrity, should be good communicator, they should have empathy and emotional intelligence. Like there will be a lot of points given in marking scheme. What you can do is you can just go through the marking scheme and you can maybe just improve your knowledge further. First, you can now what you can do is you can attempt, if you're doing it yourself also, some other past paper, then you can, like, let's say, attempt the question, try to answer it in your words, and then maybe you can go through the marking schemes properly. Let's say quality is illustrated in this case. He has shown drive and determination, self-belief. Federico mortgaged his house to start the business and gave up his role as an executive. And he communicates effectively and shows charisma. Persuaded a venture capital company to invest in his idea and persuaded unions to accept changes in the factory, right? So that is also good communication skills. And it was innovative. It was Frederico's idea to produce sustainable shoes from bamboo. He spotted a gap in the market. That's what we wrote also. And Frederico demonstrated self belief, being willing to give up his executive role in mortgages house to set up a business. This has enabled the business to finance the investment and product development to bring Frederico's ideas to the market. ठीक है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब तुम भी अटेम्प्ट करो तो मार्किंग स्कीम रीड किया करो। मार्किंग स्कीम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिविजन ऑल्सो। मार्किंग स्कीम जब रीड करते हैं ना, तो मार्किंग स्कीम के जो पॉइंट्स हैं वो भी रिविजन के लिए बहुत काम आते हैं। वो भी हमारा कंटेंट और रिवाइज करवा देते हैं, हमारी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव करते हैं। ठीक है जी, तो मार्किंग स्कीम्स को रीड करने की प्रैक्टिस रखनी है।